the Central Tax Department that in such cases also, like in case of zero-rated supply refunds, in such cases also pending the amendment in the law on the basis of identification as risk evaluation by the system, in such cases also the refund should be granted to the taxpayer so that their liquidity position improves and the amount get refunded to them which they can utilize in their working capital. As far as filing, other filing, you mean to say normal monthly return filing? In monthly return filing, presently there is no change which has been recommended by the GST Council. 237. मैम, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में बताया, अंकित हुए एबीपी न्यूज़ से, कि इसका सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को मिलने वाला है, देश के आम उपभोक्ताओं को। लेकिन हमको पता है कि जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था उसके बाद भी इसको लेकर राजनीति भी हुई थी, गब्बर सिंह टैक्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, और आज जब रिफॉर्म की बात हो रही है तब भी विपक्ष के कुछ नेताओं के जो है पोस्ट आने लगे हैं उसी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, ये कहते हुए कि जो अधिकतम स्लैब था 28 का उसको बढ़ा करके 40% कर दिया गया है। मैम, क्योंकि पॉलिटिकल है। क्या टोबैको के ऊपर 5% टैक्स मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी? क्या तंबाकू के ऊपर और गुटखा के ऊपर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम 5% में दें? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी उनके समय पर जीएसटी लागू करना असंभव माने, क्योंकि ट्रस्ट स्टेट केंद्र सरकार के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। वो कॉम्पनसेट कर पाएंगे, कुछ अश्योरेंस दे पाएंगे, इन सभी विषयों के ऊपर यूपीए सरकार के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स भरोसा नहीं किया, इसीलिए वो लागू कर नहीं पाए। हम मोदी जी के नेतृत्व में लागू भी किया और सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं जिससे जनता को राहत मिले उनका डे टू डे आइटम्स के ऊपर, और एमएसएमई और लेबर इंटेंसिव यूनिट्स को भी राहत मिले जिससे वो ईसी कंप्लायंस भी होगा, रेट भी कम होगा। कांग्रेस पार्टी को मैं कैसे क्या शब्द उपयोग करूं, उनके माइंड तैयार करें। अपोज करना है कि समर्थन देना है, अच्छे विषय जो जनता के लिए हित में है उसमें समर्थन देने में कोई जनता आपके ऊपर कोई कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, मगर अब जनता आपको सही जवाब देंगे, क्योंकि जब कट कर रहे हैं रेट उसमें समर्थन देने में संकोच और ऊपर से कंफ्यूजन करवा रही हो जनता के मन में। जनता आज आपके गुमराह वाले काम में आपके साथ नहीं है, आपको एक्सपोज करेंगे जनता। Number 4. Nikunj Johri from Reuters. Ma'am, the decision regarding exempting health and life insurance premiums, there was some apprehension that the industry had that exempting in the sector and premiums will deny them input credit, and so do you see this lowering premiums, and will this help the government in achieving its target of letting insurance for all? See, this was so much questioned last year. In the parliament, opposition members of parliament and many members of parliament from various states questioned, saying, you want to tax insurance premium? After a detailed study, taking stakeholders into confidence, we have come up with this so that families and also people who take individual insurance get their benefit. Of course, we'll make sure that companies pass on this benefit to the people who are taking the insurance cover. So beyond that, I don't think we should have any doubts about where the government's intention lies. We want to give people who are looking at medical insurance, at least the families, individuals, get the relief. But if there's more, I'd like to have Revenue Secretary add on it. Just one fact that the insurance companies themselves have publicly assured that they will be passing on the benefit.
54. Ma'am, Anuradha from Economic Times. A small clarification on compensation cess on coal. Like what will happen to that? Because you... As Madam explained in the beginning itself, that compensation cess is linked to compensation and as of now linked to repayment of loan, and so whichever day it is getting over, it will be the compensation cess levy has to stop. Current decision is that the compensation cess will only continue on those items which Madam listed out till the time the loan is repaid. On rest of the items, compensation cess is not going to be there at all. The new GST revised rate will apply. On coal, the revised rate would be 18%. Okay, thank you. 47. Ma'am, Rishabh Bhatnagar here with NDTV Profit. Currently, online gaming deposits are taxed at 28%. With the online gaming ban now, are there any special provisions for esports and online social games? So the last question, 255. हेलो सर, हेलो मैम। अमृत प्रकाश फ्रॉम ANI। सब लोग देख रहे थे जीएसटी रिडक्शन को, आप टेलीविज़न पर भी देख रहे होंगे। कितना इफेक्टिव होगा ये आम कस्टमर्स को लेकर के, और कैसे कंज्यूमर्स तक पास होगा, ये पहला सवाल है। और हम बीते दिनों में भी देख रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के बहुत बातचीत चल रही थी, और हमने इसमें भी देखा है कि एक शार्प रिडक्शन देखने को मिला है फ्रॉम 12 to 5। जब हम बात करते हैं इरिगेशन सिस्टम्स को लेकर के, ट्रैक्टर्स को लेकर के, तो हाउ डज द गवर्नमेंट व्यू दिस मूव इन टर्म्स ऑफ बूस्टिंग फार्मर इनकम्स इन पर्टिकुलर, मैम? एंड when we talk about global competition of Indian farmers, तो उनकी इनकम को इंक्रीज करने के लिए और कंपटीशन में को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर को कैसे प्रॉफिट हो, उसको लेकर के गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है? जी, जीएसटी जैसे आपने ही खुद रिकाउंट किया कि सब्सटेंशियली फर्टिलाइजर सेक्टर में सारे इन्वर्टेड ड्यूटी का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है, which will enable the domestic production of fertilizer to be encouraged. और एग्रीकल्चर सेक्टर के जितने ये इम्प्लीमेंट्स 12% पे थे, इनको 5 पे ले जाया जा रहा है, which will encourage, which will do two things. One, it will make it cheaper for farmers to get it. Two, we expect more farmers to be able to use it, which enhances productivity of the farms themselves. So there will be positive effects on this. Obviously, in addition to it, all that government is doing in agricultural sector through policies and programs and other implements, those will continue and eventually will be supplementing those efforts by this tax rationalization. I want to thank all of you for having joined the media briefing at this late hour, and also want to thank the Honorable Finance Minister and the dignitaries on the dais for That's the briefing. India's Goods and Services Tax Council, that includes Finance Minister Nirmala Sitharaman addressing and taking questions from the media at the GST conference being held in New Delhi. The rates that she and the council have announced will come into effect on September 22nd. She says the state and the centre should be clubbed together because these changes affect everyone. So what are some of these changes that the Finance Ministry of India announced? I will go through them in a little while. Items on which GST has been reduced to 5% include hair oil, toilet soap, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware, and other household articles. Items on which GST has been reduced to 0 from 5%, ultra-high temperature milk, chenna and paneer. All the Indian breads will see a nil rate. So this includes roti and paratha. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5%. Food items including bhujia, pasta, instant noodles, chocolates, coffee, preserved meat, cornflakes, butter, ghee, all these are in 5%. Reduction from 28% to 18% include air conditioning machines, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%, dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than
350cc are all now coming to 18%. Those are the slabs announced by the Finance Ministry of India.